Hello, Hello students, welcome to our class. Are you ready for the next one? So, what's we discussed on yesterday? Yesterday we are going to discuss with our ionic bonds and ionic compounds. What is ionic bond? How ionic compounds are formed? What are the main factors on which the ionic bond formation occurs? Have you learned that one? Still not? You may go through it. Always be do your regular work on regular basis. So for this day, we are going to discuss about the general properties of the ionic compounds. What are the main properties of these one? So before going to start this one, don't forget to subscribe this one for the continuity of the lecture and for the continuity of the class also. Okay? So, as we know, ionic compounds are those compounds which are formed by the ionic bond formation. And what was the ionic bond? The bond formed between the oppositely ions, or the kind of electrostatic force of attraction between two ions, so that they can form the compounds, and the compounds formed by this method is known as the ionic compounds. Now, what are the general properties of these one? Firstly, we may discuss about the physical state of the uh, ionic compounds. Actually, ionic compounds are generally crystalline solids. So here are two words, one is crystalline and another is solid. Do you know about the solids? What are solids? Those kind of the matter substances or the phase of the matter whose melting point is always be above the room temperature, that one is considered as the solids. As you are saying, definite shape, definite volumes, and all that, one high melting and boiling point, these are the properties, not the definition of the solid state. It's a state of matter whose melting point is always be above the room temperature. Now, crystalline, as we discussed under the previous lecture, that crystalline means by the formation of a perfect crystal, and crystal is the three-dimensional arrangement of the ions in a specific location. Okay? So we can say that ionic compounds usually exist in the form of the crystalline solids, and the X-ray studies of these compounds shows that these kind of the compounds do not exist as independent molecules but exist in the form of the ions. Clear? And the number of oppositely charged ion present as the nearest neighbor around an ion, that one is known as the coordination number. So as we see, ionic compounds formed by the ions, and according to that one, all the ions can occupy their positions at a fixed position or specific location.
So specific number of cations can be surrounded by cations can be surrounded by specific number of anions. Clear? So as we are saying that crystal is triangular in shape, it means that one cation can be surrounded by three another of the anions. Tetrahedral, one can be surrounded by the four. Clear? And that surroundingness neighboring one, that one is known as the coordination number. So how can we define the coordination number? You can be write that one. Coordination number. The number of oppositely charged ion present as the nearest neighbor around that ion. Okay? That one is called as the coordination number, and it means the simple one. If a cation is surrounded by 5 number of anion, that time we may say that coordination number is 5. If it's be surrounded by 6, it may be have coordination number 6. Or if it's be surrounded by only 2, that time the coordination number is 2. The simple one. I can be show you the physical state. I am showing a simple one for the sodium chloride. I am just going to be explain that. Or we can be copied from the internet source, but that takes time, so we can draw only. So how we visualize this cubic formations, I am just trying to show it. Now you can be take different color. I am just be choosing for the position of the cations and anion. You can be take this different ions, either cation or anion. Clear? So these are one of the ion positions. So you may be say that these are सोडियम आयन. क्लियर? ये आपके सोडियम आयन है. नाउ वी कैन प्लेस्ड डिफरेंट एनायंस ऑफ द क्लोराइड. यहाँ से हम अगर एनायन को, ये देखो, इसके एक सेंटर से यहाँ कहीं किसी फेज का सेंटर पड़ेगा, तो यहाँ भी कोई सेंटर है. यहाँ अगर हमारे पास एक वाइट सेंटर्ड फॉर्मेशन में है, तो इसके यहाँ भी हो जाएगा. क्लियर? और अगर यहाँ सेंट्राइज्ड है, तो हमारा इसके अपवर्ड यहाँ भी कोई एनायन होगा. तो आप इसको क्या है, डॉटेड फॉर्मेशन में दिखा सकते हो, ऐसे या ऐसे. अब आप ये देखो, one of the red dot is surrounded by how many white? ये देखो 6 दिख रहे हैं. तो हमने यहाँ white को क्या दिया, क्लोराइड का नेम दे दिया. You can be say that here each sodium ion surrounded by 6 chloride, and each chloride ion
surrounded by 6 sodium. So generally we are just saying that ionic compounds are generally crystalline solids. Maybe the ions are so strongly attached togetherly that they are lefting negligible gap between them. आयंस की अट्रैक्शन के बीच में एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस जो हैं सो स्ट्रांगली अटैच हैं कि उनके बीच में गैप होता ही लेस है. हेक्सागोनली क्लोज पैक्ड बोलते हैं हम इसको, हेक्सागोनली क्लोज पैक्ड. इमेजिनेशन वाइज डिफरेंट होते हैं, एटम्स होते तो राउंड है ऐसे ऐसे, तो आयंस भी इसी फॉर्मेशन में एक दूसरे से अटैच होंगे, बट हम उसको इस तरह की फॉर्मेशन में दिखाते हैं कि हेक्सागोनली हैं तो वो इतने नज़दीक हैं एक दूसरे के कि उसके बीच में गैप होता ही नहीं. जब हमारे पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, गैप लेफ्ट है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट टाइम definite shape, definite volume, everything will be formed, and the geometrical arrangement of the different substances is different. That depends upon the size of the ions and the magnitude of the charge on them. इस तरह से अरेंज होते हैं. ये जस्ट हमने आपको शो किया. परफेक्ट क्रिस्टल शेप बनती है उसकी, जैसे हमने इसकी बनाई है कि यहाँ कोई ना कोई परफेक्ट शेप ही होगी. ठीक है ना. यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, वो अलग चीज़ें हैं. वी आर नॉट focusing on that one, but we are saying that in general property as a physical states, ionic compounds have solid states. Is it clear? So comes to the next property, and that one is about the melting point and boiling point. Clear? So as we learned earlier, melting point is the temperature at which a solid state get converted into liquid state, or the particles of the forces get to be loosens out so that they may be move far apart from each other, creating some kind of the gap between them. And boiling point is the temperature at which liquid state get converted into vapor state. Clear? ऐसा नहीं कि at which they boil and at which they get to be melt out. Otherwise हम बोलते हैं ना atmospheric pressure becomes equal to solution pressure, then only a solution get to be boil out. तो वो boiling point की range है. But as ionic compounds, reason ionic compounds formed by strongest electrostatic force of attraction. ठीक है. strong force of attraction, hexagonally closed packed. So high amount of energy is required. High amount of energy is required to break that strongest force. Clear? And that can raises their melting points and boiling point. So as you know, the example of sodium chloride, do you know the melting points of the sodium chloride? Have ever you seen the melting of the sodium chloride? Even you may be roast on the burner, तवे पे गरम कर लो सीधा सॉल्ट को, तो भी वो मेल्ट नहीं होता. पॉपकॉर्न भी सॉल्ट में ही बनता है आपका. वो ड्राई सॉल्ट लेते हैं, उसमें उनको रोस्ट कर देते हैं, फिर भी वो कभी मेल्ट नहीं होता, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. क्लियर?
अप्रॉक्सीमेटली 1100 केल्विन के आसपास होता है. So you maybe say that because of those forces, those electrostatic forces, electrostatic force, strongest electrostatic force of attraction held together, large amount of energy is required to break out that bonding, and the variation of the melting point depends upon the charges on the ion and their ionic radii. As closer the ion in a crystal, larger will be the forces of the attraction and larger will be the energy required, and you maybe see that higher will be the melting and boiling points. If we are taking the example of sodium chloride, you can be compare with the sodium fluoride, sodium bromide and sodium iodide. सारे ही चेक कर सकते हो आप इसमें. Okay, which one have the highest? किसका हाईएस्ट होगा बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी स्ट्रांग हो सकती है? कल भी हमने पढ़ा था जिसका, अब देखो हमारा कैटायन सेम है, इसका मतलब जितनी जल्दी Na पॉजिटिव बन जाएगा. इन सब में से विच कैन एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली और मोस्ट इजीली? द सिंपल वन, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम फर्स्ट. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेगा? यस, नेचुरली फ्लोरीन का, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है ना? तो इसका मतलब फ्लोरीन सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनेगा और उसकी फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. होती है नहीं? नहीं, उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है. गेन एंथैल्पी तो किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की. तो हम उसी के रेंज में करेंगे. तो यहाँ जिसके फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे तो नेचुरली जो बॉन्ड ऑफ क्लोजनेस की वजह से होता है, एफिनिटी तो ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की. नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई? फ्लोरीन की. एंड क्लोजनेस फिर इन्हीं के ज़्यादा हो जाएंगे. दैट्स वाई सोडियम फ्लोराइड कैन हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दीज वन कंपैरेटिवली. रेफरेंस स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम. So you can be say that sodium halides have higher melting point or boiling point because these are the ionic solids, ionic compounds. Clear? Comes to the next property. Next one is the third property. That one is about electrical conductivity. Conductivity. Have you ever learned about the conductivity and conductance? Generally we can say that ionic compounds are conductor, but not in solid states. Different statements, hypothesis given. So you maybe say that ionic compounds are good conductor in their aqueous form or in soluble form or in molten state. In solid state, these are perfectly insulated. These are not showing any kind of conductivity in their solid state because the ionic compounds have the perfect lattice side of their cations and anions, and the transfer of electron is directly from the cation to the anion. So no free electron, no free charge particles be there. If no free charge particle is be there, ion is be free there, how can it show the conductivity? Conductivity depends upon only the number of charge particles.
number of ions, number of holes, number of electrons. If nothing is be available, how can it be show the conductivity? So in their solid state these are showing perfect insulation, but in their molten state means whenever this solid state get to be heated out, that time they have ions. Clear? So they show good conductors of electricity in the solution on in their molten state. In the solutions on in their molten state, the ions become free to move. However, these do not conduct in their solid states, because in the solid state strong forces will be there, but those forces may be break out with the help of their aqueous formations, with the help of water, and they can be um, divided into their ions. Whenever the division or dissociation of the ions will be there, motion of the ions must be there, and this small motion of the ions can creates the conductivity, and we can say that these are good conductor in their molten formation. Clear? And the next one is ionic compounds can show the ionic reactions. They can be write down in their ionic equations, ionic reactions, and according to these ionic reaction the different phenomenon is shown. That one is known as isomorphism. Now what is this? Iso means same. So these is the behavior, which one is same behavior shown by the different compounds, different ionic compounds, different कंपाउंड्स हैं बट नेचर उनका सेम है. फॉर एग्जाम्पल किसका? NaCl, KCl, both are different salts, different chloride of sodium and potassium, but both have same kind of the reaction. कि आपका क्या है, सोडियम से सोडियम आयन बनेगा, क्लोरीन से फिर हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन बनेगा, दोनों के अट्रैक्शन से हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना. द सेम रिएक्शन कैन बी पॉसिबल फॉर द पोटाशियम. पोटाशियम से पोटाशियम आयन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, and this electron can be gained by the chlorine, so form the chloride negative. So we can say that all the compounds formed by same number of electron gain और loss, जहाँ भी एक जैसे होगा. मान लो आपके पास ऑक्सीजन का बना है, कैल्शियम है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कैल्शियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक जैसा ही होगा. Then we can say that these kind of the compounds are showing same behavior. केमिकल बिहेवियर भी तो सेम होगा, बिकॉज हम क्या कह रहे थे, केमिकली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी पे डिपेंड करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी पे ही था, इलेक्ट्रोवैलेंट पे ही था. So we can say that all the ionic compounds which have same kind of nature, they or same number of electron loss or gain, they can show the same behavior. Rather they are of considering the different compounds, but chemically their behavior will remain same. They will behave similarly, and this phenomenon is known as isomorphism. So you can be say that ionic compounds can be write down in ionic equations. उनके आयनिक इक्वेशंस लिखने भी पॉसिबल है, प्लस वो आइसोमॉर्फिक नेचर शो करते हैं. आइसोमॉर्फिज्म प्रोसेस है, फिनोमिनन है, आइसोमॉर्फिक नेचर हो जाएगा. अभी जैसे मैंने आपको NaCl का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना कि वो 6 से सराउंड हो रहा है, तो ऐसा किसी और का भी स्ट्रक्चर हो सकता है. सेम बिहेवियर लाइक जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम सिंगल चाइल्ड हैं तो सबका बिहेवियर सेम, नो, हम डिफरेंट है. वो नेचर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, कि एक ही थे बट डिफरेंट शो कर रहे हैं. बट यहाँ क्या है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, बट नेचर वो क्या शो कर रहे हैं, सेम शो कर रहे हैं. इस वजह से वो क्या होंगे, सेम होंगे. इज इट क्लियर? सो कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वन, एंड दैट वन इज अबाउट द solubility.
generally we say that ionic compounds or ionic solid can soluble in water, and that depends upon the like dissolves like. अब यहाँ हम कैसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड है, वो खुद भी पोलर होते हैं, पोलर इन द सेंस उनके पास चार्ज फॉर्मेशंस होती हैं। अब हमारा वाटर है वो भी पोलर ही है, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव। सो लाइक डिजोल्व्स लाइक मीन्स जो जैसा होगा वो उसी में। तो नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, पोलर सब्सटेंस पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका पोलर बिहेवियर होता है, दे शो सम काइंड ऑफ पोलैरिटी, एंड वाटर इज ऑल्सो भी polar in nature. So we can say that ionic compounds are generally soluble in water and other polar solvents having high dielectric constant. एक ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इस वजह से। अब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं।